हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे राइट्स 2026 की जो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, उसके लिए कंप्यूटर नॉलेज का जो सेक्शन है उसके लिए आज टॉपिक 2 एडवांस एक्सेल, जिसमें मैक्रो एंड वीबीए के कुछ क्वेश्चंस अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो है स्टार्ट रहेगी। इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। वैसे देखिए, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिसमें 23 चैप्टर 2000 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एडवांस एक्सेल में माइक्रो एंड वीबीए बेसिक के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अ माइक्रो इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट अ बिल्ट इन फंक्शन लाइब्रेरी, second a record or written sequence of instruction to automate task, third a data visualization tool, and fourth a worksheet formatting style। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, a recorded or written sequence of instruction to automate task, because macro automate repetitive task using recorded step or VBA code। नेक्स्ट सेकंड, VBA स्टैंड फॉर। तो VBA मतलब होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, बिकॉज विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर राइट माइक्रो इन एक्सेल एंड अदर ऑफिस एप्स। नेक्स्ट थर्ड, विच की कॉम्बिनेशन ओपन द VBA एडिटर इन एक्सेल। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कंट्रोल प्लस ई, सेकंड कंट्रोल प्लस एफ अल्टर प्लस F11, थर्ड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V एंड अल्टर प्लस एंटर। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड अल्टर प्लस F11। अल्टर प्लस F11 ओपन द विजुअल बेसिक एडिटर वेयर माइक्रोज आर क्रिएटेड एंड एडिटेड। नेक्स्ट फोर्थ, a macro recorded using the macro recorder will typically be stored in। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एक्सेल फॉर्मेट, सेकंड VBA कोड इनसाइड अ मॉड्यूल, थर्ड CSV फॉर्मेट एंड फोर्थ SQL डेटाबेस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड VBA कोड इनसाइड अ मॉड्यूल, बिकॉज recorded macros are converted into VBA code and stored in modules। नेक्स्ट फिफ्थ, which of the following is a correct file extension for micro enable excel workbook। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डॉट xlx, सेकंड डॉट xls, थर्ड डॉट xlsm एंड फोर्थ डॉट csv। तो करेक्ट आंसर है थर्ड डॉट xlsm, बिकॉज इट सपोर्ट डॉट xlm सपोर्ट macros while डॉट xlsx does not। ओके, next sixth, what is the purpose of option explicit statement in VBA। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट automatically declare variable, second force explicit declaration of all variable, third disable variable usage and fourth enable debugging mode। तो करेक्ट आंसर है सेकंड force explicit declaration of all variables, because it ensure all variable must be declared reducing error due to typos। नेक्स्ट सेवंथ, विच ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन एक्सेल वर्कबुक इन VBA। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट शीट, रेंज, वर्कबुक, सेल। तो करेक्ट आंसर है थर्ड वर्कबुक, बिकॉज वर्कबुक इज अ टॉप लेवल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द एक्सेल फाइल। नेक्स्ट एट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रेफर्स टू सेल A1 इन VBA। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेल A1, सेकंड रेंज A1, सेकंड थर्ड रेंज डबल कोटेशन A1 एंड सेल इन ब्रैकेट A1। तो करेक्ट आंसर है थर्ड रेंज इन डबल कोटेशन A1, बिकॉज इट्स अ करेक्ट सिंटैक्स। नेक्स्ट नाइन्थ, व्हाट विल द फॉलोइंग VBA कोड डू। तो देखो ऑप्शन है रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 100। अब ये कोड दिया है तो इट असाइन 100 टू A1 सेल, मतलब यहाँ पे सेकंड जो है सेट वैल्यू ऑफ A1 टू 100। ओके, नेक्स्ट टेंथ, which loop is best suited when the number of iteration is known beforehand। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डू व्हाइल लूप, डू अंटिल लूप, फॉर लूप एंड सिलेक्ट केस। तो करेक्ट आंसर है थर्ड फॉर लूप, बिकॉज फॉर लूप इज आइडल फॉर फिक्स इटरेशन। नेक्स्ट, वैसे देखिए अकाउंट्स के लिए पीडीएफ अवेलेबल है फाइनेंस एंड अकाउंट्स की, जिसमें 7 सब्जेक्ट्स कवर किए हैं और 7 सब्जेक्ट्स मिला के 7000 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज
कर सकते हैं। नेक्स्ट 11, व्हाट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप इन VBA इफ नॉट डिक्लेयर्ड? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंटीजर, स्ट्रिंग, वेरिएंट, डबल। तो करेक्ट आंसर है थर्ड वेरिएंट, बिकॉज वेरिएंट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। नेक्स्ट 12th, which of the following is used to handle error in VBA? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ट्राई कैच, ऑन एरर स्टेटमेंट, एक्सेप्शन ब्लॉक एंड डीबग हैंडलर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑन एरर स्टेटमेंट, बिकॉज VBA यूज ऑन एरर फॉर एरर हैंडलिंग। नेक्स्ट 13, which keyword is used to declare a variable in VBA? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट dim, where, let, set। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट dim। dim is used to declare variable. dim means dimension. नेक्स्ट 14, what does the following code do? तो देखो लूप यूज किया है फॉर लूप का, फॉर i equals to 1 to 5, ओके, देन सेल i कॉमा 1 डॉट वैल्यू i एंड नेक्स्ट ऑफ i मींस वैल्यू जो है वो x से इंक्रीमेंट हो रही है, 1 से 5 का लूप है, और कॉलम जो है वो क्या करेगा, i का कॉलम जो है फिल करेगा, मतलब सेकंड फिल कॉलम a फ्रॉम 1 to 5, ओके। नेक्स्ट 15, which of the following trigger a micro automatically when a book is open? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट auto underscore open, workbook underscore start, open underscore file and start underscore macro। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट auto underscore open, it's a macro run when workbook open। Next 16, which statement is used to assign an object reference in VBA? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट let, set, dim, assign। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड set। set is used for object assignment in VBA। नेक्स्ट 17, what is the role of message box in VBA? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इनपुट डेटा, सेकंड डिस्प्ले आउटपुट मैसेज, थर्ड सेव वर्कबुक एंड फोर्थ रन माइक्रो। तो करेक्ट आंसर है सेकंड डिस्प्ले आउटपुट मैसेज, बिकॉज मैसेज बॉक्स डिस्प्ले पॉपअप मैसेज। नेक्स्ट 18, which of the following is not a valid VBA data type? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, स्ट्रिंग। तो करेक्ट आंसर है थर्ड फ्लोट। VBA यूज सिंगल और डबल इंस्टेड ऑफ फ्लोट। नेक्स्ट 19, what does active sheet refers to in VBA? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट शीट, लास्ट शीट, करंटली एक्टिव शीट्स एंड हिडन शीट। तो करेक्ट आंसर है थर्ड currently active worksheet, because active worksheet refers to the currently selected worksheet। Next 20, which of the following improve micro security in Excel? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट disabling VBA, use digital signature, saving as .csv and removing formula। तो करेक्ट आंसर है सेकंड using digital signature, because digital signature help verify trusted macro and improve security, okay। वैसे देखिए कंप्यूटर नॉलेज की पीडीएफ अवेलेबल है, जीके बैंकिंग पीडीएफ अवेलेबल है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ग्रामर, सभी पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।